ट्राई किए? हाँ सर, थोड़े किए थे पर हो सर रहा मेरे है? को थोड़ा डाउट है सर, लाइक दूसरे क्वेश्चन से कौन सा आपको क्वेश्चन? व्हाट्सएप कर दो सर। व्हाट? कौन सा क्वेश्चन? आई हैव सम डाउट्स सर। से विच क्वेश्चन? Two circles each of radius 5 units touch each other at the point 1, 2, 1,2. 2. If the equation of their common tangent is 4x plus 3y is equals to 0 and कौन सा cy क्वेश्चन? is, हाँ सर, एक मिनट। डीपीपी कौन सा डीपीपी का क्वेश्चन डाउट है? आप बोल दीजिए, मैं देख लूंगा। नहीं सर, डीपीपी का नहीं है सर, ये हमारा मटेरियल का है सर। अच्छा अच्छा, हम कर मटेरियल। हाँ। हाँ सर, और 2-3 वैसे क्वेश्चन है सर सर्किल्स में। लास्ट रहेगा क्वेश्चन, या क्वेश्चन आप ग्रुप में भेज दीजिए, मैं बता दूंगा, सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर डिस्कस किए थे? कॉमन टेंजेंट, राइट? टू कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल डिस्कस किया था। अच्छा, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट। हाँ, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, कंडीशन उसका, राइट? सो डायरेक्टली ऑन दिस टॉपिक दे रहा हूँ क्वेश्चन जेईई में 2023 का अप्रैल 15 अप्रैल का क्वेश्चन है। राइटिंग क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स to the circle x square plus y square minus 18x minus 15y plus 131 equal to 0 and square plus y square minus 6x minus 6y minus 7 equal to 0 is A ऑप्शन है 3, B 1, D 0। करके बताइए कि कौन सा आंसर सही है। ये है आपका जेईई मेन 2023 अप्रैल से। मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ एवरीवन क्लास क्लास के टॉपिक पे। आर यू डूइंग आदिति, आर यू डूइंग? एक कंडीशन थे हमारे फोर कॉमन टाइम के लिए। एक कंडीशन थे R1 plus R2 लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, एंड थ्री कॉमन टेंजेंट के लिए C1 C2 इक्वल टू R1 plus R2। सो आपका क्या करना होगा, आपको हर कंडीशन में क्या ही है, रिलेशनशिप क्या है, रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। आप दो चीजें कीजिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालिए एंड दोनों का रेडियस, तो आपको दिखेगा कैसा सर्कल है तो कितने टेंजेंट्स होंगे। कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन बताइए एवरीवन। वेदा, आप लास्ट क्लास में मिस किए थे। वेदा? यस सर।
लास्ट क्लास आपने नहीं किया था ना? No, sir, I attended and I left. What? I attended the class and I left the class, sir. तो आप 12th क्लास में ना? ना? What, sir? आप 12th क्लास में है ना? Yes, sir. हेलो, आपने तो सर्कल पढ़ रखा होगा पहले? Yes, sir. I think I lost the internet connection, right? Askin is visible to you? Everyone, Aditi, just confirm. Askin visible? Shanmukh? Yes, sir. Yes. Yes. कौन सा ऑप्शन सही है? ए, गुड गुड, करेक्ट, इज करेक्ट। R1 कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 15y प्लस 131 इक्वल टू 0। सो R1 इक्वल टू रूट अंडर माइनस 9 स्क्वायर प्लस माइनस 15/2 स्क्वायर माइनस 131। कितना है R1? 81 प्लस 225/4 माइनस 131। तो सबका हो गया क्या? मैं छोड़ दूं? 225 माइनस 4 R1 is equal to 5/2 आया ना सन्मुख? And R2 equal to 3 square plus 3 5, right? So and C1 C2 is the distance between center. C1 coordinate is 9, 15/2 and C2 coordinate is 3, 3, right? So C1 C2 is equal to root under 9 minus 3 square plus 15/2 minus 3 square. If you calculate, get 36 plus 81/4, get 4. So a condition कैसा है? C1 C2 is less than R1 plus R2, right? 15/2, right? No. C1 plus C2, C1 plus C1 C2 equal to R1 plus R2. ये केस है, right? R1 plus R2 is 15/2 and C1 C2 is 15/2. So सर्कल जो होगा वो दोनों इस तरह से हैं, right? इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो कितने नंबर कॉमन टेंजेंट होंगे? 3 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, लाइक दैट। ये हमारा 3
common, and A option is correct for this question. So now our next topic is length of common tangent. Length of common tangent. So next topic is length of common tangent. Any doubt? So last question, any doubt? Anyone? Veda? Shanmukh? Shanmukh done. Madhusudan? No Any doubt, doubt? sir. Okay. Sure. Akshit? Akshit? Sai? Any doubt from last question? Last class जो मैंने डिस्कस किया उसमें डाउट है? साई? आदित्य आपका तो हो गया होगा, right? So now length of common tangent. So see L external and internal. So L external will be direct common tangent, right? So like that is the case. This is called L external, right? So center to this is center, right? Let's C1, C2, R1, R2, right? So this is the perpendicular, right? So can you think what is your approach? Can you think how to get the L external? Just think. So if you make like a parallel line L external, join line with parallelly, L external also, and if it R1 is greater than R2, so this is also 90 degree, so let it P. So PC1 length is R1 minus R2, right? And if you join like that, a little bit, see, if you join center to center, so we can see L external is, and this is D, where we let the distance between center is D. Diagram is not clear. सॉल्व कीजिए, बताइए इसका L external कितना आएगा? L external, this is called L external. L external है आपको, एंड जो हमारा सेंटर C1 सेंटर C2 इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें D गिवन है, D C1 C2, इट मींस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर D है, राइट? एंड दिस इज R1, दिस इज R2. तो हमें बताना है कि L external क्या होगा, राइट? सो वी can make like that, R2 same R2 length, this is also R2 now similar, and this is a 90 degree, right? So this will D is the C1 C2 is the hypotenuse, right? And this distance will be, this distance is also R2, right? Because same, so this is distance here to here at P. PC1 is R1 minus R2, right? So in right angle triangle, PC1 in right angle triangle, right angle in triangle PC1 C2, we can write as a, this is also L external, right? So L external equal to L external, that is root under D square minus R1 minus R2 square. This is the L external, right? Now
what will the L internal? We need to remember this formula. L external is nothing but difference distance between center minus R1 minus R2. This is L external, length of external tangent, common tangent, right? Now, similarly, the length of internal tangent is it transverse tangent. So now, this is called length of internal tangent. 90 degree. This is a R2, C2, R1, C1. Now, we make this is a called L internal. L internal. This is L internal. This distance between center is D given, right? So now extend up to R2 distance here to here. This is also R1. So join the line. This is a parallel line, right? So this is the angle is 90 degree. So now this is also L internal, right? This is a parallel line, right? So we can write as a in triangle. This is a num P. So in triangle C1 P C2, we can write as a. So this will be whole distance is C2P is R1 plus R2, right? So we can write as a D square minus R1 plus R2 square. This is the L external. L external equal to L internal equal to L internal is nothing but L internal equal to D square minus R1 plus R2 square. This is the formula for L internal. Any doubt? I think no doubt. If L external, so think L external always greater. So how to remember formula? I'm saying L external always greater. So R1 minus R2, D square minus R1 minus R2. So L in the case of L internal, D square minus R1 plus R2. It means distance between center minus sum of radius square is L internal, and L external is distance between center square minus difference between radius square under root, right? So now I'm giving question 2 on this topic. Question is find the length of external and internal common tangents to two circles common tangents to x square plus y square plus 14x minus 4y plus 28 equal to 0. X square plus minus 14x plus 4y minus 28 equal to 0. Do हो जाएगा वेरी इजी। आपको पहले क्या फाइंड करना है R1 R डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और ये फार्मूला अप्लाई कर देना। आई थिंक हो जाएगा। सो नो नीड टू डिस्कस, राइट? आंसर बता दीजिए बस जल्दी से करके।
C1 coordinate is -7, 2. C2 is 7, -2, right? And R1 is equal to 49 plus 4 minus 28, that is 53 minus 28, that is 24. 20, 16. And the C1 C2 is equal to 7 plus 7 square plus 2 plus 2 square, that is 49 196 plus 16 root 212. So L internal will be L internal equal to root under D square minus R1 plus R2 square, and L external is root under D square minus R1 minus R2 square. Right? So get L internal equal to root under D square, it means 200, 112 minus R1 plus R2, 5 plus 9, 5 plus 9 square. That is that is L external equal to 2 minus 9 minus 5 square, that is nothing but 196, that is 14. 4 and 14. Internal is L internal and external is 14. I think no doubt. Very easy topic, because we need to find radius to center, right? So we get the, apply the formula, get the answer. So now our next topic is radical axis. So radical axis is the locus of a point which moves in a plane so that the length of tangent drawn from it to the two circles are equal. It means radical axis ऐसे पॉइंट होगा जिससे अगर हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो लेंथ टेंजेंट का होगा वो इक्वल होगा, राइट? सो locus, so definition is locus, radical axis is locus of basically moves in plane so that the length of tangent drawn from it to the two circles are equal. So now I make, if you make the diagram, you can easily understood. क्या बोला गया डिफरेंस में? रेडिकल एक्सिस द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू सर्कल. आपके पास
2 सर्कल होंगे, और अगर हम ऐसे पॉइंट्स फाइंड करना है जिससे अगर हम ड्रॉ करें तो जो दोनों लेंथ हो वो सेम हो। लेट p, जो इसका लोकस फाइंड करना है, लेट p इज h, k every time. So now this is the tangent for C1 S1 circle, right? S1 equation is x square plus y square plus 2gx1 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0. Now this circle is equation is h2 x square plus y square plus 2gx g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0. So pt, this is the point contact is t and this is q, right? So if pt is agar locus, so that is pt equal to pq square, pq, right? pt equal to pq, right? We know na, if external points से अगर हम जो tangent, we know the in one circle, अगर हम बाहर के पॉइंट से सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टू टेंजेंट ड्रॉ होगा जो कि टी एंड क्यू इसका अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो पी, तो पीटी इक्वल टू पी क्यू होगा, राइट? वी नो इन नो, राइट? आप लोगों को पता होगा ये। और अगर हम, तो ये हमारे क्या है, टॉपिक्स क्या है, रेडिकल एक्सिस। सो रेडिकल एक्सिस इज नथिंग बट द लोकस ऑफ a point which moves in a plane so that the length of tangent drawn from it two circle are equal, मतलब pt and pq equal होगा, right? So now locus is, so find the locus. So pt equal to pq. So pt is, we know now how to find pt. Can you say pt will be h, k से pt क्या होगा? बस पॉइंट को पुट करते हैं ना, लेंथ आपको pt निकालने के लिए बताया हूँ, टेंजेंट वो एक्सटर्नल पॉइंट से। सो pt इज नथिंग बट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2 so you can apply the pt square equal to pq squaring, right? So get h square plus k square plus 2g 1h plus 2f1 k plus c1 equal to h square plus k square plus 2g2h plus 2f2k plus c2, right? So now we can make cancel out, right? So 2h g2 plus 2k f1 minus f2 plus c1 minus c2 equal to 0, right? So focus is, so we h x and y, k को y से, तो 2x g1 minus g2 plus 2y f1 minus f2 plus c1 minus c2 is the locus, right? This is a locus. So we can say, easily say radical axis is s1 nothing but s1 minus s2 equal to 0. So we need to remember this formula, radical axis for radical axis s1 minus s2 equal to 0. So ये सब तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, बट हमें अगर रेडिकल एक्सिस है इट मींस s1 minus s2 equal to 0, right? So s1 minus s2 equal to 0, it means always a straight line, right? So this is called radical axis. This line is radical axis. Got it? So equation is for radical axis s1 minus s2 equal to 0, right? So this is the radical axis. Now, any doubt? Any doubt? No, sir. Veda, Sai, Yes, sir. any doubt? No, sir. Good. With Shanmukh, समझ में आया रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट? समझ में आया? हाँ सर, रेडिकल समझ एक्सिस, गया। हाँ ओके।
Now, note point is 4. If two circle, if two circles touches each other externally, then this radical axis is called what? Can anyone can say if two circle touches each other externally, then this radical axis क्या कहलाएगा? Can you say? Anyone? इसको क्या नाम देंगे हम लोग? If two circle touches each other externally, then this radical axis is called सन्मुख आदित्य. वो क्या होगा? Can you think? Veda, anyone? Madhusudan? One tangent, sir. क्या? Common tangent. Common tangent. Good. Very good. Common tangent. Like that, this is the S1 circle and touches externally like that. So this is the radical axis. Radical axis, and nothing but we can also say common tangent. Radical axis also is common tangent. Equation is S1 minus S2 equal to 0. This is a S1, this is a S2. This one equal to 0. Now, third note point is second. If two circles cut each other at two distinct points, then this radical axis is called, say, क्या कहलाएगा? Anyone? If two circle cut each other, at two distinct point, at two अलग अलग पॉइंट पे कट करें, distinct points, then this radical axis is called what? Can you think? Say, क्या कहलाएगा? If two circle cut each other at two distinct point, then this radical axis is called, Aditi, say. Anyone? Madhusudan, can you answer this question? Veda, Shai, Akshit, क्या कहलाएगा? शे, सन्मुख, called common code. इस तरह के होंगे ना डायग्राम, इस तरह से each other कटेंगे. So this is the radical axis. And इसको हम और क्या बोल सकते हैं? दोनों सर्कल का एक कॉमन कोड है, राइट? Also can say common code, right? So now we need to find length of common code. From this topic, IIT question asked the length of common tangent, common code. So next topic is length of common code. Length. Can you think how to find length of common code? Think and discuss with me. Anyone? Just think.
कॉमन कोड का इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, दिस इज S2 इक्वल टू दिस इज S1, so this equation is S1 minus S2 equal to 0, right? Radical axis और common code का equation, right? So now we can easily say S1 minus S2 is line, right? So can you think and discuss with me what is the length of common code? This means here to here distance is let this is a point A, this is a point is B, this is a C1, this is a C2. So can you think what will the how can calculate? मैंने बीच यहाँ से सेंटर से C1 S1 सर्कल से सेंटर से मैंने कॉमन कोड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया बाइसेक्टिंग, सो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट? सो AD इक्वल टू DB होगा, राइट? AD इक्वल टू DB, राइट? बिकॉज C1 D perpendicular to AB, right? So AD equal to DB. And can you think how to get distance C1D? Just think how to get distance C1D. We know now in a straight line how to calculate distance, perpendicular distance. We know. Center to perpendicular distance. Basically, this L is nothing but L is S1 minus S2, that is line, right? So center से आपको perpendicular distance जो कि C1D क्या होगा, जो इक्वेशन आएगा रेडिकल एक्सिस का, वहां से आप we know ना फॉर्मूला, if x plus by plus c equal to 0 and point is P, perpendicular distance we can write as a mod of 2 into A plus B plus C upon root under A square plus B square. This is the perpendicular distance, right? We know na straight line, right? So we can find the this is the perpendicular distance is P, right? Name. So we need to find AD, right? So this is nothing but R1, right? So we can easily AD is equal to R1 square minus, apply the Pythagoras theorem. R1 square minus P, right? Square. R1 square minus P square. So nothing but AB is nothing but length of common code that is 2 times equal to 2 times root under R1 minus P square. This is the length of common code. So we need to remember 2 times R1 square minus P square. That is the length of common code. So R1 की जगह R2 स्क्वायर लिख दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा? सो वहां पे क्या लेंथ ऑफ कॉमन कोड के जो फॉर्मूला है R1 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. सो I want to write in terms of R2. What will your answer in this case? सेम ही होगा. So we अगर हमें लिखना हो 2 times R2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो P जो होगा वो C2 सेंटर से डिस्टेंस निकाले जाएंगे, राइट? पर्टिकुलर डिस्टेंस, राइट? सो नो चेंजेस, राइट? सो बहुत केसेस में सेम ही आंसर आएंगे, राइट? बट वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस C2 पॉइंट से निकालेंगे, राइट? सो नो चेंज. क्वेश्चन देता हूँ. क्वेश्चन इज find the equation of the circle described
on the common code of the circle I square minus 5 0 at 8 plus 7 equal to 0 as diameter. अब वो क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब ऑन कॉमन कोड ऑफ द सर्कल एज ए डायमीटर. जो हमें कॉमन कोड का इक्वेशन आएगा वो क्या काम करेगा, वो बेसिकली डायमीटर. सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है. आप लोग कर रहे हैं, ठीक है. योर अप्रोच विल बी सन्मुख, आदित्य, वेदा. पहले क्या करना होगा हमें, क्या करना है हमें, C1 C2 का सर्कल करना है, राइट. C1 C2, यस. सो नो नीड टू C1 तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें सर्कल का इक्वेशन बनाना है. अब हमें लाइन पता होता है, एक सर्कल का इक्वेशन पता होता है, तो हम लिखते हैं ना फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे, एस प्लस लैम्डा टाइम्स एल, और एस प्लस एल तो आ जाएगा. एल कैसे आएगा, एल आएगा एस वन माइनस एस टू कर देंगे तो हमें लाइन कोड जो मिलेगा कॉमन कोड डाया का काम कर रहा है, राइट. अंडरस्टूड. मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एस वन माइनस एस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें कॉमन का इक्वेशन लाइन होगा, राइट. सो बताना क्या है, ऐसे सर्कल इक्वेशन बताना है जो जो कॉमन कोड हो वो डायमीटर हो, राइट. सो हम बता कि एस एस वन एस प्लस लैम्डा टाइम्स एल इक्वल टू 0. रिक्वायर्ड सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, तो वही जो होगा. अब लैम्डा निकालना है बेसिकली, राइट. इसमें पता है तो लैम्डा को निकालने के लिए क्या करना होगा, लैम्डा निकालने के लिए हमें जो हम लिखेंगे इसमें प्रश्न होता है उसका सेंटर को कॉमन कोड पे पास करा देंगे, लार्ज करा देंगे, तो हमें लैम्डा वैल्यू आ जाएगा. तो वैसे आप इसे दो सर्कल है, राइट, S1 S2. R1 R2 निकालने से कि दोनों एक दूसरे को पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो एक कॉमन, यही क्या होगा, कॉमन कोड. सो अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे मींस कॉमन कोड है, राइट. सो वी कैन इक्वेशन इज S1 minus S2 equal to 0. S1 minus S2 करेंगे तो S1 is nothing but x square plus y square minus 4x minus 5 equal to 0. S2 is x square plus y square plus 8y plus 7 equal to 0. So now S1 minus S2 is, if you have minus 4y minus 8y minus 14, right, minus now, right, plus y plus 3 to 0, right. So हमें इसका a मिल गया plus 2y, we get x plus 2y equal to plus 3 equal to 0, right. So we can write a circle, required circle is required, इसका पता करना है सर्कल का इक्वेशन, required circle we can write as a S1 plus lambda times L equal to 0, right. So S1 is x square plus y square minus 4x minus 5 plus lambda times L. It is x plus 2y plus 3 equal to 0, right. So now we need to find center, right, because center is lie on this line, because this is a given is common code is
diameter. It means x plus 2y plus 3 is nothing but dia. It is also diameter for circle जिसे हमें फाइंड करना है, उसका ये जो कॉमन कोड हमारा आया है वो उसका डायमीटर का काम कर रहा है, राइट. कॉमन कोड इज वर्किंग लाइक diameter for required circle, right? So lambda, lambda, right? And plus 3 lambda minus 5. Center is nothing but 4 minus lambda by 2 and minus lambda, right? So center lies on this line, right? X plus. So because center lies on the line x plus 2y plus equal to 0, right? So 4 minus lambda by 2 plus 2 into minus lambda. Who is left? Some see internet connection is lost ना. समझ में आया? Any doubt? आप इसको देखिए क्या? Any doubt? Any doubt? Aditi? Aditi? Yes, sir. आउट है? एनी डाउट? Hmm. समझ में आ गया ना क्या करना है? बिकॉज इसमें क्या दिया हुआ है, समझ में आ गया? कॉमन कोड मतलब S1 माइनस S2 जो कॉमन कोड है वो जो सर्कल रिक्वायर्ड है जिसे फाइंड करना है वो उसका डायमीटर का काम कर रहा है, राइट? सो S1 माइनस S2 हमें वो कॉमन कोड होगा जो कि डाया होगा अगला का, तो हम वी कैन राइट द फैमिलीज ऑफ सर्कल इक्वेशन, राइट? S plus S1 plus lambda times L equal to 0, right? And we get the center, and center lies on the common chord, right? Because it's the diameter for. So get the lambda value, get the required circle equation, right? If you write the S2 plus lambda times L, answer will change or same? Anything? Answer is same, no? Salmuk? Because that time center is changed and same answer get, right? So I am giving second question to you. Just show length of common chord. Find the length of common chord. Yes. Find the equation and length of common chord of two circle
two circles, that equation is 2x square plus 2y square plus 7x minus 5y plus 2 equal to 0, and x square plus y square minus 4x plus 8y minus 18 equal to 0. Try to solve. Say the answer. This is equation and length of common chord. Easily आप बोल देंगे S1 minus S2 is equal to 0, that is common chord, right? Common. Find the answer. Say the answer. शन्मु कीजिए, आंसर बताइए। शन्मु हाँ सर, कर रहा हूँ सर। Okay, good. Madhusudan, are you doing? Madhusudan, are you doing? Question and of common chord of two circle. Last one topic is left from circle, that is orthogonally. Two circle cuts orthogonally. Then what will the equation? From this topic, many times asked JEE advanced question directly in JEE advanced. Very simple, very short topic. I will discuss in the next class. Then complete the circle with some more question, QIQ question, and then I will start parabola. Then hyperbola. I will teach complex number, then vector and 3D, like that. Madhusudan, are you doing? Aditi is left, right? Madhusudan. Length of common को क्या है बताइए? S1 minus S2 is length of common, right? S1 minus S2 equal to 0 is the equation of common chord. S1 minus S2 equal to 0, right? So get the answer for S1 is, make the first of all, make the coefficient is S1 क्या है हमारा 2, so we need to divide by 2, right? So x square plus y square plus 7 by 2x minus 5 by 2y plus 1 equal to 0. S2 is x square plus y square minus 4x plus 8y minus 18 equal to 0. So S1 minus S2 is nothing but 7 by 2x plus 4x minus 5 by 2y minus 8y plus 1 plus 18 equal to 0. You get 15x
minus 5y minus 16y is 30 0, right? So get 15x minus 21y plus 38 equal to 0. This is the equation of common code, right? Yeah, Madhusudan, equation of common. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड से दो क्वेश्चन इसमें, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड. सो लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या होगा? r2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आप किसी से निकाल लीजिए. सो डायग्राम इस तरह से, इसी ए लेट ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये लेट C1 C2 है एंड दिस इज C1. दिस इज द R2. सो this is T, right? So find first already, right? So ये हमें रेडिकल इसका इक्वेशन आ गया 5x minus 21y plus 38 equal to 0. So we can C2D equal to, C2D is nothing but सेंटर C2 क्या है? सेंटर C2 है हमारा 2, minus 4, right? 2, minus 4. So 2 into 15 minus 22 38 upon root under coefficient 15 square plus 21 square, right? Mod C2D, right? So get the C2D. C2D is nothing but calculate 30 plus 84 plus 38 by root under 225 plus 441. So get 8 12 152 upon root under 65, right? 666 666. So get the C2D and R2 is nothing but R2 equal to root under 4 square plus 16, right? 4 plus 16 plus 18, that is 38, right? Root 38. So AD is nothing but R2 square minus C2D square. Get 38 minus 152 upon 666. Get the answer. Length of common cut, that is AP, is 2 times AD. This is the answer. Any doubt? Shanmukh? I think no doubt. No, sir. Shanmukh? Madhusudan, have you done? मधुसूदन, षणमुख हो गया था आपसे? आई थिंक हो गया होगा. षणमुख? हाँ सर. षणमुख, यस. So can I end the meeting? हाँ सर. Shanmukh? Okay. Good Okay, night. sir. Bye. Good night, Okay, sir. good night.